ये सिंपल है बिकॉज 428 क्या होता है इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 21. ये नोटेशन है जहाँ पे वी राइट द रिमाइंडर हियर, we write what we are dividing here, and we write in mod what we are dividing by. So this is the divisor, this is the dividend, and this is the remainder. This is the form of modular arithmetic, right? So we understand ki 428 square, which is congruent to 8 square, it is permissible to apply exponential here. Okay, so this would mean 428 square is congruent to who raised their hand? 428 square is congruent to 8 square. 8 square is 64. 64 is congruent to 1 mod 21. And since 428 square is congruent to 1 mod 21, therefore you can raise it to any power you like, right? So, for example, I can raise it to the power of 1012, which will also mean that the answer, the remainder is 1 to the power 1012, which is nothing but 1. That is why the remainder is 1. Okay. Yeah, who raised their hand? Or was it by mistake? Okay. Okay. Let's go to the next question. And I hope this was clear to everyone. Remainder के questions are very common, so practice this, okay? Binomial theorem से हो या फिर modular arithmetic से हो, but do practice this. It's fine, it is okay, no problem. Whatever way you have, but if you have any doubts in this remainder problems, do tell me. इसके आगे भी there would be some problems as well, but do tell me, ठीक है? कि हाँ इसमें doubt है मेरे को. So next question is the remainder when 7 to the power 103 is divided by 17. It's divided by 17. 7 to the power 103 is divided by 17. Yeah. तो इसको कैसे करेंगे? टेक योर टाइम. फिर मैं बताता हूँ सबसे आसान उपाय. 4, got it. And subtracting 1, can you explain, Alice, what you are saying? Like what method? Subtracting 1 from where? 7 minus 1. Okay. So for everyone, I'm going to. It's fine. Okay. Forget about all these methods you're using. Do not try to use them at exam. Trust me. I'm going to teach you something completely new, and this is going to help you. Okay. जब भी दिखे कि प्राइम नंबर जो है वो मॉड में है, ठीक है? अगर प्राइम नहीं भी है तो वो भी हम करेंगे. जब भी दिखे इफ यू हैव अ प्राइम नंबर, so first of all get familiarized with this definition. When I write this, just this definition is enough for you to understand and do any problem in this category. When I write this means the remainder of A when divided by B, sorry, क्या लिख रहा हूँ? By M is B. Okay, and it is read out loud. This is read out loud as A is congruent to B mod M. ठीक है, तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा मेरा रिमाइंडर. यू आर डिवाइडिंग दिस नंबर बाय दिस नंबर. दिस इज एज सिंपल एज इट इज. ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेट मत करो इसमें, बस समझ लो. बीच में जो रहता है दैट इज द रिमाइंडर. जिससे हम डिवाइड करते हैं वो मॉड में रहता है, और जो डिवाइड कर रहे हो आप वो लेफ्ट में रहता है. ठीक है, इसका आपको निकालना होता है. एक बात याद रखना, किसी भी मॉड सिस्टम में, तो मॉड एम जैसे है, तो यहाँ पे मॉड 17 है, राइट? तो किसी भी मॉड में नंबर्स, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मॉड 5 के अंदर देयर आर ओनली 5 पॉसिबल नंबर्स, और वो नंबर होते हैं 0 1 2 3 4. मॉड 7 अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होते हैं? 7 पॉसिबल नंबर्स. आई होप यू गेट द आइडिया. 0 1 2 3 4 5 6, बिकॉज दीज आर द ओनली पॉसिबल रिमाइंडर्स जब आप 5 से डिवाइड करते हो. दीज आर द ओनली पॉसिबल रिमाइंडर्स जब आप 7 से डिवाइड करते हो. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी
your modulars, like the set of remainders that you can get when you divide by something. अब बात करते हैं एक सिंपल चीज की. When p is a prime, when p is a prime, अगर एक p एक प्राइम नंबर है, तब आप सिंपली लिख सकते हो फॉर एनी इंटीजर a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p. ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं. जब p एक प्राइम नंबर है, तो आप लिख सकते हो a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p. इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फर्मैट्स लिटिल थियरम. द नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नेम कभी नहीं आएगा और ये भी कभी नहीं आएगा, बट यू कैन यूज इट डायरेक्टली. तो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? व्हाई डू आई वांट टू डू दिस? तो आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन सिंपली ये है, राइट? आपको निकालना है 7 टू द पावर 103 इज कॉन्ग्रुएंट टू हाउ मच. तुमको नहीं पता है ये. मॉड 17. 17 से डिवाइड करेंगे 7 टू द पावर 103 को, तो आंसर क्या आएगा रिमाइंडर में? ये मुझे पता है, ये मुझे चाहिए, राइट? ओके. फर्स्टली 17 इज अ प्राइम. ओके, 17 इज अ प्राइम. मधुर, बाय द वे, तुम्हें तो थोड़ा आइडिया होगा इसका ऑब्वियसली, because you just attended वैसे भी the SSAMI batch today on itself, and we also talked about it, the remainders and stuff like that. But yeah, for everyone, this is a very simple lemma. इसको बस याद रखिए कि किसी भी नंबर a के लिए, किसी भी इंटीजर a के लिए और एक प्राइम p के लिए, a to the power p minus 1 हमेशा वन रिमाइंडर छोड़ेगा when divided by p. Okay, this is known as Fermat's little theorem. अब देखो 17 इज अ प्राइम, ठीक, और 7 इज ऑल्सो अ नंबर. प्राइम भी है, बट यहाँ पे हम नंबर सोचेंगे. 7 इज अ नंबर. तो फर्मेट्स थ्योरम मुझे क्या कहता है? 7 टू द पावर 17 माइनस 1 क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17. करेक्ट. तो ये ऊपर तक का थ्योरी था. यहां से मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी स्टार्ट हो रहा है. तो 7 टू द पावर 16 है 1 मॉड 17. आप बोथ साइड को पावर 6 में रेज कर दो, तो यहाँ पे भी क्या होगा? पावर 6 में रेज हो जाएगा. ये बन जाएगा मॉड 17. तो ये बन जाएगा क्या? 7 टू द पावर 96 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17. पास आ गए बहुत. अब कितना चाहिए? 7 टू द पावर 7 चाहिए, राइट? तो 7 टू द पावर 103 अगर मुझे इसको लिखना है, तो मुझे बोथ साइड क्या करना है? 7 टू द पावर 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, जो मैं कर चुका हूं, और इसीलिए ये मेरा आंसर आया है. अब 7 टू द पावर 7 तो आप रिमाइंडर नहीं डाल सकते ना. तो यहां से वापस आप आ जाओ इसको इजीली करने के लिए. पहले देखो 7 स्क्वायर कितना होता है? 49, राइट? तो आप लिख सकते हो कि 7 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 49. क्या होता है? रिमाइंडर क्या छोड़ता है जब 1 डिवाइडेड बाई 17? 49 leaves a remainder of 15, right? When divided by 17, 15. और मॉड्यूलर अरिथमेटिक में डू यू नो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप नेगेटिव भी लिख सकते हो. तो 17 टू जा 34, और 34 के बाद 15 आप जाओगे तो 49 आता है आपके पास. बट आप पीछे से भी लिख सकते हो. 17 3 जा 51, राइट? पीछे का लिख सकते हो रिमाइंडर -2 है. ये भी आप लिख सकते हो. बोथ आर फीजिबल. तो हम इस डेफिनेशन को लेंगे कि 7 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -2. मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 7 टू द पावर 7 का रिमाइंडर. तो 7 स्क्वायर अगर -2 है, तो उसको आप होल टू द पावर 3 कर दो बोथ साइड. इस साइड भी क्या होगा? होल टू द पावर 3 हो जाएगा. ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि पावर हम बोथ साइड रेज कर सकते हैं टू एनी पावर, टू एनी इंटीजर पावर. तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 7 टू द पावर 6. ये बन जाएगा क्या? -8 मॉड 17. करेक्ट. अब -8, माइनस से पॉजिटिव कैसे जाएं? 17 ऐड कर दो इसमें. तो ये क्या बन जाएगा? 17 -8 कितना होता है? 9 होता है ना. 9, 9 मॉड 17. तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए 17 माइनस कर दो. नेगेटिव से पॉजिटिव आने के लिए रिमाइंडर को, जो भी मॉड है उसको प्लस कर दो. तो 7 टू द पावर 6 अगर 9 मॉड 17 है, तो 7 टू द पावर 7 क्या होगा? बोथ साइड 7 मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल है. 7 इंटू 9 is 63. और 63 को अगर आप डिवाइड करते हो 17 से, क्या आएगा? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि दिस इज माई मॉड 17, तो इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं किसमें? 63 मॉड 17 कितना होगा? 17 3 जा 51, और रिमाइंडर आ रहा है 12. 12 मॉड 17. तो 7 टू द पावर 7 क्या होता है? 12 मॉड 17. और ये हो जाता है 12. ठीक है. अब ये मैंने इतना लंबा क्यों किया? इतना लंबा मैंने इसलिए किया ताकि मैं समझा पाऊं. अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हुए मेथड,
ये आप सेकंड में करोगे क्योंकि आपका फर्स्ट थॉट ही आएगा, अच्छा 7 टू द पावर 16 इज 1, 7 टू द पावर 16 1 होता है बाय फॉर्मेट्स थ्योरम, तो 7 टू द पावर 96 होगा 1, उसका मतलब है 7 टू द पावर 103 होगा 7 टू द पावर 7। अच्छा 7 स्क्वायर तो होता है -2, क्योंकि 49 इज 2 लेस देन 51, तो ये तो होता है -2, तो 7 टू द पावर 6 हो जाएगा -8, और 7 टू द पावर 7 हो जाएगा -56। 56 क्या होता है, 56 आता है -5, राइट, क्योंकि 51 से 56 5 दूर है मॉड 17 में, तो ये आंसर आता है -5। मुझे तो पॉजिटिव में चाहिए, तो 17 ऐड कर दो, आंसर है 12। तो ये जो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड है, ये आपको एक्चुअल में लगेगा व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। अदरवाइज आपको ये मेथड, ये आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, और मैं एक काम करूंगा, मैं एक पीडीएफ दूंगा इस क्लास के बाद, जहां पे रिमाइंडर्स कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ गए, आप देख रहे हो कि जब हमारे पास ये इजी क्वेश्चन आते हैं 428 टाइप्स के, ये हम इजीली कर सकते हैं, राइट। बट इस तरीके का क्वेश्चन कुछ आ गया जहां पे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इज गोइंग टू बी सो हार्ड, लाइक इट्स नॉट इवन रिकमेंडेड, क्योंकि बट सोल्यूशन में जब आपको कोचिंग या कोई वेबसाइट सोल्यूशन देगा जेई वाला, वो आपको बाइनोमियल में ही देगा वो, ठीक है, दैट इज नॉट करेक्ट। I mean, that is not the efficient way of doing it. Modular arithmetic is something that should be taught to everyone. I just don't know कि क्यों ये सिखाया नहीं जाता है in high school where it should be. But this is something that you should know. बहुत आसान चीज है, सिंपली हम इक्वेशन से डील करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, होल क्यूब करते हैं चीजों को, सिंपली कुछ नहीं करते इस, ठीक है। अब इसमें सबके लिए डाउट्स होने चाहिए, तो आई वांट टू हियर ओनली डाउट्स, कि किस स्टेप में डाउट है, ठीक है। तो स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स वन बाय वन, एंड डाउट्स पूछो मुझे कि इस स्टेप में डाउट है, इस स्टेप में डाउट है, ये कैसे आया, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन, ताकि आपको समझ में आए पूरा। ओके, देख लो अच्छे से एंड देन स्टार्ट आस्किंग। तो सिंपली में इस तरीके के हर क्वेश्चन में, एंड दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड, कि ऐसे ही आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, आप किसी भी शिफ्ट में दो, बाइनोमियल थ्योरम इज नोन टू गिव, लाइक जेई में यही क्वेश्चंस आते हैं, either independent term और coefficients equate करने को कहेगा, like either way you have to calculate coefficients, that's the whole point. So first write down the general term, PR plus 1 क्या होगा, NCR whole to the power 10 minus R, right, and then you have 1 upon 2x cube whole to the power R, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10CR, दिस इज a to the power 10 minus R by 2, and then x का जो एक्चुअल है वो बन जाएगा आई थिंक 20 minus 2R minus 3R 2 to the power minus R। इसको क्या चाहिए मुझे, इसको इंडिपेंडेंट बनाना है, तो 5R is 20 एंड R is कितना 4, राइट। Sir, I don't think J will give such questions anymore because it will increase more competition. Well, ये 2024 का ही है, like this is literally last year's question. So, I mean, how else can you design questions, right? If you design questions which are out of scope, it won't be in JEE. And you have to give questions which involve, coefficients or something like that. तो वो तो आपको करना ही है, कि कोएफिशिएंट्स के अलावा इफ यू गिव समथिंग एल्स, तो एनीवे लेट्स, आई विल नॉट डू ऑल दिस कैलकुलेशंस, तो यहाँ से आपको सिंपली वैल्यू पुट करके निकाल देना है, आंसर इज गोइंग टू बी a इज इक्वल्स टू 2 एंड a स्क्वायर इज 4, ठीक है। बट हाउ एल्स कैन यू गिव क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आपको अगर देने हैं यहाँ पे, तो देयर इज, एज वी हैव, आई थिंक, आई डोंट नो इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट इन दिस बैच, बट you can give questions like this, ki r equals to 0 to n, and then you can write, let's say, NCR, wait, you can give NCR whole into R square minus 1 by R plus 1. Okay, so this might be a calculative question, ठीक है, या फिर R cube बना दो इसको, R cube बना दो, यहाँ पे R by R plus 1 लिख दो, so stuff like this, right? What is the value of this? Can you calculate this? And let me give you a number instead of this. Let me give you, wait, let me give you a number. Yeah.
Yes, r equals to 0 to 100 cr whole into r cube minus 1 by r plus 1. So try this, because if they plan to give questions which are complicated, I just made out of the fly a complicated question. So this could be an example. Try this. See, kya aata hai answer. See if you can attempt it. Answer is not important. It's more important if you can actually get to the bottom of it, of how to do it, and if you can proceed in that path. Sir, over here, can we do like this? Like, we know that if something of this format is given, then we can easily kind of reduce it to 100 by r, then n minus 1, that is 99 c r minus 1, r cube Mhm, minus 1 r plus 1. And now we mhm, take 100 outside the summation part, and we mhm, kind of reduce the summation to r is equal to 1 to 100, and then mhm. we can multiply 1 by r into the expression which is given inside the bracket. So like this we can keep on continuing. So can we do this? Yeah, I think so. You can do this. The method you're describing, that is the reduction method, which is how you find out usually NCR into R, those kind of sums, which Yes, sir. is right, n into 2 to the power n minus 1 and stuff. So yeah, I'll show is basically the formulas for all the sums up to cube, and also the denominator 1 by r plus 1 as well. I'll show all of these formulas and derive them today, so that it is not an issue anymore. So before doing this sum, I want to derive a few things which you need to memorize, because a question of this kind has already come once in JEE mains. I do not know if it was 24 or 23, but there was one question, and what I'm going to simply do is try to derive them first. Okay, and derivation is not important if you're not looking to learn how it derives, but the result is definitely important because you're going to need it. So, so let us start with where we want to be. So obviously, summation r is equals to 0 to n, ncr x to the power r is equals to 1 plus x whole to the power n. Okay. So from this, first first one is that if you put x as 1, you simply get summation r equals to 0 to n, ncr is 2 to the power r, 2 to the power n. First formula is done. Okay, now differentiate both sides and you get r equals to 0 to n minus n, r into ncr into x to the power r minus 1 is equals to n whole into 1 plus x whole to the power n minus 1. Okay, put x as 1 again and you will get the answer, which is this: r equals to 0 to n, r into ncr is equals to n into 2 to the power n minus 1. Okay, so this is, and then we got this again different. So now in order to differentiate, we first need to multiply by x on both sides. So we multiply by x on both sides to get this nx 1 plus x whole to the power n minus 1, and now we differentiate again. Okay, what happens after we differentiate? We differentiate to get r equals to 0 to n, r squared ncr x to the power r minus 1 again, because we are differentiating x to the power r, right? And on the right hand side, you get n 1 plus x whole to the power n minus 1. And again, you get plus n into n minus 1 into x into 1 plus x whole to the power n minus 2. Simply the product rule of differentiation. Put x equals to 1 again, and you get your third result: r equals to 0, then r squared of ncr is nothing but, so put n here, you get n into 2 to the power n minus 1 plus n into n minus 1, and this is 2 to the power n minus 2, I think. Right? Yeah, you can simplify this, but yeah, this is more or less this is your answer. Okay.
So again, from this part, what we can do is this. We can simply differentiate this one more time, finally. Differentiating this, first, obviously, first we need to multiply by x. R equals to 0 to n, r squared, NCR. Multiplying by x on this expression gives you x to the power r. And on the right hand side, you get n x 1 plus x whole to the power n minus 1. And on this side, you get n minus 1 x square 1 plus x whole to the power n minus 2. Now, differentiate both sides. Left hand side, you get r equals to 0 to n, r squared, NCR, r cube, NCR, x to the power r minus 1. Right hand side, this expression is the same as this, right? This was the same. So I think we are going to simply get a repeat of this. So we can simply write n whole into 1 plus x whole to the power n minus 1 plus n into n minus 1 and x squared, uh, not x squared, right? That was this. Okay. X whole into 1 plus x whole to the power n minus 2. And now for this second term, we can do this plus. So firstly, let's do x square. So 2n minus 1 x for 1 plus x whole to the power n minus 2. And then let's do that. So that would be n into n minus 1 into n minus 2 x square 1 plus x whole to the power n minus 3. This is a long expression, but since we are going to put x equals to 1 anyway, therefore you get summation r is equals to 0 to n. And then you get r cube in CR is equals to, let us put x equals to 1, we get n into 2 to the power n minus 1 plus n into n minus 1 into 2 to the power n minus 2 plus 2n into n minus 1 into 2 to the power n minus 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 into 2 to the power n minus 3. This is your answer. And now let us come to the integral wala part. So again, summation r equals to 0 to n NCR x to the power r is nothing but 1 plus x whole to the power n. Integrate both sides from 0 to 1 dx. Integrate both sides from 0 to 1 dx. Okay. What do you get? Therefore, you get r equals to 0 to n NCR 1 by r plus 1, which is what was given. And on the right hand side, you simply get 1 plus x whole to the power n plus 1 by n plus 1, which is nothing but 2 to the power n plus 1 minus 1 by n plus 1. And therefore, your summation for 100 should look something like this. Summation r is equals to 0 to 100 CR into r cube minus 1 by r plus 1 should be equals to put n equals to 100. So we get, I think, 100 to the power 99 plus 100 into 99 2 to the power 98 plus 2 to the power n minus 1. This also is 2 to the power n minus 1. So 100 into 99 into 2 to the power 99 plus 100 into 99 into 98 into 2 to the power 97 minus this thing, which is 2 to the power 101 minus 1 by 101. This is going to be your required answer. I hope everyone is clear on this. If not, do raise your hand. And if you have any comments about this, any solution, how do you like this, let me know. This is the whole thing. I'll provide you the PDF. No worries. I'll just provide this PDF in the section of the preliminaries, I think.